Hello. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. This is the second question, Bilal. We are moving to the second question. Already I gave you some Ji, sir. questions here. You can see this is our statement. I want to repeat once again the statement. What is the statement of D'Alembert ratio test? Summation un is a series of positive terms. You cannot see any negative term Ji, in sir. that series. You should get only the positive terms. Okay, and limit n tends to Terms. Yes, sir. un by un plus 1 value we have to find out, where un represent the nth term of the given series. From un, if it is a series form, then we write un plus 1 as the immediate next term. Otherwise, if un is given like a nth term, simply replace wherever n is there, we replace with n plus 1. And we check this value, limit n tends to infinity un by un plus 1 value. Suppose it is depending upon the value of L, if it is greater than 1, convergent, less than 1, divergent, equal to 1, test fails. We did one question already and we got it, whether it is, see, this is the problem, and we got it less than 1, it is divergent. Let us see one more question here. X variable came, so how the situation will be? Look at this one. So here un value is what? Tell me. Give me the answer. UN value is xn by x. X to the power of n by n, right? Nth X. term of the given series Oh, already. sorry, n. Yes. So easily we can move on to find out un plus 1 now. Very easy. What will be the answer? Come on. X to the power of n plus 1 by X to the power of n. plus 1. Wherever n is there, we replace what? N plus 1. Right now? 1. Ji, Right? sir. Now let us find out the value of un by un plus 1. Later on, we can apply limit n tends to infinity on both sides. So un value is, we are having Both here sides. x power n divided by n. Okay. After each and every step, you give me the Ji, answer sir. so that I can understand you are there in the class. So second fraction will become Yes, sir. reciprocal, so that it is becomes n plus 1 by x to the power of n plus 1. For my convenience purpose, can I write like this? X power 1 into x power n, जी सर लिख सकते हैं. because bases are equal, power should be added. We know the rule in basic classes, we learn already. So that this x Yes, power sir. n, I want to cancel with this x power n, right? So then what is left of? Tell me. Un by un plus 1 value, tell me. Un by un plus 1 value, it is equal to, we This are one. left with n plus 1 divided by n N into 1 by x is also left here. into x. Into x means जी 1 by सर. x. Okay. Amtur Rahman, your sound is coming हाँ. here. Nonsense. Now take n common from the numerator and cancel out with this denominator like this. Un by un plus 1. Amtur Rahman, close the door. N will be taken out. Okay. N will be taken out. It is becomes जी सर. 1 plus 1 by n. 1 1 plus plus 1 1 by by n n. divided by n into 1 by x. So what happened actually here is, once again I want to cancel this one. Which one? This n, and this n will be cancelling out. So then what is left of? Un by un plus 1 value, un by un plus 1 value, it is equal to, what is left of? Tell me what is left of? 1 plus Left of 1 by n 1 into plus 1 by n into 1 by x. 1 by x. Let us apply, taking limit n tends to infinity on both sides. Taking limit जी सर. n tends to infinity on both sides. Infinity on both sides.
So when we are going to take the limit n tends to infinity on both sides, what happened here you can see. So it is becomes limit n tends to infinite un by un plus 1 value un by un plus 1 value, it is equal to limit n tends to infinite, limit n tends to infinite. What is left here? 1 plus 1 by n, 1 plus 1 by n into 1 by x. So as I told you the rule, as n tends to infinity, what about 1 by n tends to 1 by n tends to 1 by n tends to 0, sir. 0. So finally, what is left of? What is left of? 1 by x. 1 by x. 1 Can by we x. say 1 by that? Can x. we say that it is this series is convergent? Yes, sir. On what basis you can say? Tell me. Answer less than 1 आया क्या आपको? It is less than 1. कहाँ है less than 1? Where is less than 1? 1 by x है ना, सर? तो 1 by x less than 1 होता? हाँ? हाँ. कैसा बोल सकते हैं आप? x की वैल्यू क्या ले रहे हैं आप? What is the value of x you are taking? समझा नहीं. See, we are not Value of conclude to this any result by, I am writing the statement, by D'Alembert ratio test. Actually, we are reaching to some unknown answer by D'Alembert ratio test, by D'Alembert ratio test, or simply you can write ratio test. If this value 1 by x, if this 1 by x value greater than 1, okay, or if this 1 by x value greater than 1, then only this series will become convergent. तो इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करके लिखे, if you simplify, take the reverse reciprocal on both sides, x should be less than 1, then convergent, then un convergent. समझ में आई बात? ये जो वैल्यू आपकी जी आई हाँ. पे 1 by x जो आया, ये अगर 1 by x की जो भी वैल्यू है, अगर वो ग्रेटर देन 1 हो रही तो इट्स कन्वर्जेंट होता. और अनदर स्टेटमेंट इज हाँ, ओके. इफ 1 by x वैल्यू शुड बी लेस देन 1, अगर आप ऐसा अननोन आंसर पे आके रुक गए तो ऐसा स्टेटमेंट लिखना है इसका, x should be greater than 1, then un divergent, then un divergent. If another case 1 by x, suppose it is equal to 1, then what do you say? Then जी. test fails. वही है ना स्टेटमेंट में, then test हाँ. fails. एक बार फिर से मैं आपको स्टेटमेंट जाके Fails, बता okay. देता हूँ. देखिए ऊपर एक बार आप स्टेटमेंट जाके बता देता हूँ. स्टेटमेंट यू कैन सी हियर द स्टेटमेंट इज, what the statement says, un is a series of positive term, limit n tends to infinity, un by un plus 1 value equal to l, l greater than 1 convergent, l less than 1 divergent, l is equal to 1 test fails. ये l की जो वैल्यू आई अपने को 1 by x आई, 1 by x अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट होता. ठीक है ना? जी सर. तो whenever test fails, now x is equal to 1. From here, if x is equal to 1, if I am simplifying, cross multiplying, what is the value of x here? X is equal to, what is this? X is equal to, बोलो, when cross multiply करें तो x value कितना होता? Do you understand? क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स वैल्यू बनी चाहिए था ना सर. तो वही तो लिखा ना मैं, when x is equal to 1, what happened to this our un value? अगर x value 1 हो रहा तो un क्या हो जाता? देखिए un यहाँ पे, एक्स वैल्यू यहाँ पे, क्वेश्चन नहीं सुना. yeah, yes, here the question, if x is 1, 1 to the power of n becomes what? एक्स इज 1 टू द एनी पावर नंबर ऑफ 1 का पावर अगर आप 1000 भी रख दिए तो 1 ही होता ना. 1 ही आता सर. जी तो सर. वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे, इट इज 1 by n, राइट? इट इज 1 by n, टेकिंग सिग्मा ऑन बोथ साइड्स, समेशन भी ले सकते,
अरे समेशन यूएन सर जी बोलिए, एनी डाउट? नहीं सर, नहीं सर। This one we are n power 1 है actually. This one we are comparing with 1 n by n power p. What is p value? P is equal to 1 right now by p test, जी सर। by p test, p series test, un is convergent. तो कंक्लूजन इसका आप जब आंसर लिखेंगे, hence hence the given series, क्योंकि आंसर एक्स में आ रहा इसीलिए ऐसा सिचुएशन अराइज हो रहा, और इस टाइप के ही क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में आते। Hence the given series convergent if, अच्छा कन्वर्जेंट देखिए यहाँ पे अपन स्टेटमेंट में क्या लिखे ऊपर, कन्वर्जेंट कब हो रहा बोल के लिखे, देखिए यहाँ पे देखिए x इज लेस देन बोल के लिखे ना, x इज लेस देन 1 कन्वर्जेंट, और इक्वल टू 1 में भी कन्वर्जेंट प्रूफ करे अपन, तो वी शुड राइट टुगेदर, टुगेदर मीन्स x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड divergent divergent if x is, कब हो रहा डाइवर्जेंट, ये क्या लिखे स्टेटमेंट में अपन, यहाँ देखिए क्या लिखे, ग्रेटर देन 1, तो ये है आपका x इज ग्रेटर देन 1। अच्छा ये पूरे सिचुएशन क्यों अराइज हो रहे बोलिए आप, ये हो गया आपका प्रॉब्लम कंप्लीटेड। एक बार फिर से मैं बता दे रहा सर हूँ, ये प्रॉब्लम जरा टफ लगा सर मुझे। टफ नहीं होता, असल में वेरिएबल एक्स आने से कंफ्यूज हो रहे हैं आप, टफ नहीं है कुछ भी, मैं बताता हूँ शुरू से एक बार, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, ओके सर। और आगे पूरे क्वेश्चन ऐसे ही है। जी सर। एक बार देखिए स्टार्टिंग से, जी सर। लुक एट दिस इज द क्वेश्चन, रेड कलर से जो लिखे हुआ है, summation x power n by n is greater than 0, we have to check whether this nth term, this series will be convergent or divergent or test fails to check डाइवर्जेंट। करें। तो the nth term of the given series, summation value means un value, that is x power n by n. So nth term is given, we are going to find out un plus 1 value. So wherever n is there, we are simply replacing with n plus 1. The next step is un by un plus 1, x power n by n. Yes, second fraction will become reverse, that you know to cancel it, right? यहाँ तो मालूम है आपको। Now taking n common and जी सर। cancelling out this also you know. Now taking limit n tends to infinity, and then you know this 1 by n becomes 0, so we are getting our answer is 1 by x. तो 1 by x पे आके आपका आंसर अननोन वैल्यू पे आके रुक रहा। अगर मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल x की वैल्यू अगर 2 हो रही सपोज, तो 1 by 2 लेस देन 1 क्या होता है, लेस देन 1 बोलते कन्वर्जेंट, अंडरस्टूड और नॉट? जी सर। ये आपका आंसर जो है, दिस आंसर इज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x। इफ दिस x, वी डोंट नो दैट x वैल्यू अननोन है यहाँ पे, इफ दिस x वैल्यू वट एवर इट इज, अगर x की वैल्यू 2 है सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो 1 by 2 होके लेस देन 1 होके कन्वर्जेंट हो जाता, मगर अपने को तो नहीं मालूम, तो इसीलिए क्या करना है, वो स्टेटमेंट लिखना है इसका, बाय डीएलएम बाय रेशियो टेस्ट वट एवर द वैल्यू, एल वैल्यू लेस देन 1, इसको क्या करें, दैट इंप्लाइज, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखे, x is less than 1 then un convergent, right now, then un convergent, जी सर। and 1 by x is less than 1 means x is greater than 1, un is divergent, right? और लास्ट में अपन क्या लिखे, इफ 1 by x is equal to 1 then test fails। टेस्ट फेल जो हो रहा ना, टेस्ट फेल बोलते अपना आप, टेस्ट फेल हुआ तो x की वैल्यू पे टेस्ट का रिजल्ट क्या आता है वो भी बताना। If x is equal to 1, un becomes what? This is our un value. X is 1 means 1 power n is 1 only, 1 by n we are getting. So we are getting here un value is 1 by n. तो इसको अपन p टेस्ट से कंपेयर करें तो p तो वैल्यू सर। 1 हो गया। तो ये तो आपको पता है कि p टेस्ट से कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास p टेस्ट से इक्वल टू में भी और लेस देन में भी, दो केसेस में ये जो सीरीज है 1 बाई एक्स वाला जो टर्म है, दो केसेस में कन्वर्जेंट हो रहा है, एक लेस देन 1 पे हो रहा, एक इक्वल टू 1 पे हो रहा, वो अपन मिला के लिखे, एक्स पे आके आंसर रुक गया ना, अपना आंसर एक्स पे रुक गया ना, तो वो एक्स की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू जी 1 आ सर। रही कोई भी केस में,
लेस देन आर इक्वल टू 1 अगर आ रही तो वो जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट होती, और ग्रेटर देन 1 है तो फिर डाइवर्जेंट। ऐसा आप कंक्लूजन में लिखना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हाँ थोड़ा सा सर। कंफ्यूज रहता मेरे को मालूम है, क्योंकि आप ये टॉपिक को पहली बार सुन रहे हैं। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 करते कि आप देखिए, अब अपने मुंह से बोलते कि अब मेरे को 100% समझ में आया। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ। ठीक है सर। यही सिचुएशन आने वाली है अपने को, अपना आंसर एक्स पे आके रुकने वाला है, ठीक है। अब मैं इसको कर रहा हूँ सॉल्व। अब आप बोलेंगे सर आई गॉट इट 100%। देखिए अब मैं कर रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन होती है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन इज समेशन x पावर 2n by n plus 2 into root of n plus 1. Okay, let me do that question. Look at here. Our question is number 3 we are solving. क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर। यस, द क्वेश्चन इज summation x to the power of 2n. So many times this question is given in exams. n plus 2 into root over n plus 1. Right? Now I am writing the solution. Look at solution. Summation value means which value it is? It is the value of, what do you say? समेशन वैल्यू मींस यूएन वैल्यू, nth वैल्यू। un value, nth term of the given series. X power 2n by जी सर। n plus 2 into root of n plus 1. होल रूट n+1। un सर तो आ हमारे गया, को एक स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं हमारे प्रोफेसर, मैं वो आपको भेजूं? टेक्स्ट बुक का फ्रंट पेज बोल रहे हैं आप? नहीं ऐसा नहीं है, नहीं, आप मैं टेक्स्ट बुक भिजाइए। की पीडीएफ भेज सकता हाँ भिजाइए भिजाइए, नो प्रॉब्लम, भिजाइए। हूँ। ओके सर। un plus 1 we can find out now, right? Can you tell me what happened here? जी How सर। we are getting that term? X power कौन सा? un plus 1 I want. Wherever n is there, we replace with n plus 1. यहाँ रफ कॉलम में करके बता देता हूँ। जी सर। 2 into n की प्लेस पे एक्स क्या टू रख, एन प्लस वन x की प्लेस पे n plus 1 रखना है। तो what is the answer? X power, if you simplify, 2n+2, very good, 2n+2, 2n+2। very good, excellent. 2n plus 2 divided by n will be replaced with n plus 1. So together it is becomes n plus 3 होता ना, n की हाँ प्लेस पे सर। n plus 1 रखे तो ये क्या हो जाता? n plus 2 ना। ओके, क्या जी कर रहे सर। हैं अपन, जहां भी n है वहां पे n plus 1 रख रहे हैं पूरे टर्म्स में, ओके। राइट? डाउट है? नहीं सर, जी, विल मूव एन ऑन के टू द प्लेस में नेक्स्ट। n+2 रखना है बस हर जगह, n यूएन plus प्लस 2 वन नहीं, के लिए। n plus 1 रखना है, n plus 1 रखना है, n सॉरी, की एन प्लेस प्लस वन पे n एन plus प्लस 1 वन रखना रखना है, सॉरी वही तो है, बस उतना ही करना है। अब जी आएंगे अपन यूएन नेक्स्ट, जी सर। नेक्स्ट स्टेप में। दैट स्टेप इज un by un plus 1 value, un by un plus 1 value, which is equal to, first term will be as it is, it means x power 2n whole divided by n plus 2 into root of n plus 1 will be as it is. This is multiplied by second fraction will become reciprocal. So it will be like this, n plus 3 root over n plus 2 and whole divided by this term x power 2n plus 2. Can I split and can I write like this? Okay, लिख सकते हैं? जी सर लिख सकते। जी Right. सर। So what is the cancellation term? This one x power 2n cancelling with this x power 2n. Clear?
right? जी Which is equal to what is left that we should write. What is left off here? N plus 3 left off, and here denominator n plus 2 also left off, and here numerator n plus 2 is there. In दोनों को मिला के together I want to write in a single root n plus 2 by n plus 1, और यहाँ पे एक 1 by x square भी बच गया. Don't forget that. That is the main motto of this problem. 1 by x square. Clear है ना? Can I take n common from here? जी सर. N common means n 1 com plus 3 by n. And once again, if I am taking n common, means what is left here? 1 plus 2 by n, right? Under the root of, जी सर. once again n common, 1 plus 2 by n. And denominator, once again n common, we are left with 1 plus 1 by n. Common लेने का मतलब वो टर्म से अपन divide कर रहे. Into 1 by x square. जी Don't सर. forget to write 1 by x square. So this what happened here x square. is G. This one n, n, this n will be cancelling out. Then finally, what is left off? बोलिए क्या बच गया? un by un plus 1 value. un by un plus 1 value. What n is left plus off? 1. Tell me. What is left off? Tell me. 1 by x, 1 plus 3 by n by 1 plus 2 by. Yes, yes, that only I'm asking. 1 plus 3 divided by n 3 by n divided by 1 divided by plus 1 plus 2 2 by by n n. into Okay. 1 Into root of, under the root of, root of 1 plus 2 by n by divided by 1 plus 1 by n into 1 by x square, sir. exactly, exactly, into 1 by x square. So then taking limit n tends to infinity on both sides. So directly we apply limit n tends to, mention करके भी ले सकते हैं, without mentioning also you can take un by un plus 1 value. Limit n tends to infinity un by un plus 1 value, it is equal to limit n tends to, very very important question, okay? Limit n tends to infinity जी sir. 1 plus 3 by n. I hope that you understand. 1 plus 2 by n into root of 1 plus 2 by n divided by 1 plus 1 by n into 1 by x square. So what happened as n tends to infinity? कौन से term 0 होते बोलिए? This is become 0. This is become 0. 3 by n, हाँ 3 by n 0 होता, 2 by n 0 होता, 2 by n 0 होता और 1 by n 0 होता सर. These are the terms which becomes 0. Then what it 0 is left as of? we apply the limit. Yes. Finally, what is the Left answer? of is 1 whole root into whole 1 root 1 by by, x square. तो खाली अपने पास बचता 1 by x square h. देख लीजिए एक बार. तो रूट को क्या होता? Root of 1. Root of 1 हाँ plus रूट 0 ऑफ 1. is यस root सर, of सही 1 सही सही. divided by सॉरी root सर. of 1 plus जी 0 सर, is जी 1 सर. only. 1 into 1 is 1 only. 1 यस by सर, 1 is 1 only. जी Finally, सर. 1 by x square only left off. पिछले क्वेश्चन में 1 by x पे आके यस रुके सर. थे, देखिए अपन पिछले क्वेश्चन में 1 by x आके रुके तो आपको कंफ्यूजन हुआ है ना? तो अब मैं फिर से यही जी लिखूंगा जी बाय जी. डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट. अब आप बोलेंगे क्या लिखना है, कमन बोलिए. बाय बाय, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट. और सिंपली यू कैन राइट बाय रेशियो टेस्ट. बाय बाय रेशियो टेस्ट. रेशियो टेस्ट बोलिए. if सिग्मा 1 by x if square is greater than 1, 1 by x square is greater greater than than 1, 1, which implies, इसको थोड़ा convergent. सिंप्लीफाई करें. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स. x square should be less than 1, then convergent. ऐसी है ना? Convergent, yes. जी सर, सही. दूसरा पॉइंट बोलिए स्टेटमेंट का. if 1 by x square If 1 by x square is lesser than 1, implies, then x square is greater than 1, exactly, then then it divergent. is divergent, sir. हाँ, थर्ड Divergent. पॉइंट क्या होता?
थर्ड पॉइंट, if 1 by x square is equal to 1, implies that क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन x टेस्ट square is फेल्स, equal to 1. जी, देन test टेस्ट fails. फेल्स। टेस्ट फेल्स होते कि फेल पे जो भी वैल्यू आई एक्स की, वो क्वेश्चन में वापस सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर। ओके, तो ओके, अब 1 को हम सब्स्टिट्यूट करना है x स्क्वायर की जी, जगह. एक्स स्क्वायर की प्लेस पे इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, then implies that square will go that side, you will get x value is प्लस आर माइनस 1, बट अपन नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे खाली। क्यों लेंगे पॉजिटिव, क्यों लेंगे बोलिए आप? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, नेगेटिव टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं अपन। नहीं सर. पॉजिटिव टर्म, सो एक्स इज इक्वल टू 1 को क्या करना है, अपने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ है देखो अपना क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, जहां भी एक्स है ना वहां पे रखेंगे क्या, 1। 1 टू द पावर ऑफ एनीथिंग, व्हाट इज द आंसर? 1 टू द पावर ऑफ 2n, बोलिए क्या होता? व्हाट इज दिस समीशन? आवाज नहीं आ रही सर. हेलो हेलो. हेलो, आई कैन हियर यू, आवाज आ रही मेरे को आपकी। 1/n+2 रूट ऑफ हेलो सर, n आपकी प्लस वन। आवाज. आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? हेलो, जी सर, अब आ रही. जी। तो अपना क्वेश्चन जब ये से था, आवाज देखिए। लैग हो गई थी सर आपकी. कभी कभी होता। मैं क्वेश्चन एक बार यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ। ये है अपना क्वेश्चन, एक्स पावर 2n x बाई पावर 2n. बाई n+2 into root over n+1 is our question, right? Actually what we are going to do, we are going to take, if x is equal to 1, we are going to deal the situation when x becomes 1, x की वैल्यू 1 रख रहा हूं मैं, तो 1 टू द पावर ऑफ 2n क्या होता? 1 टू द पावर ऑफ 2n. 1 का कितना भी पावर रहने दो, 1 ही चाहता ना जी आंसर। 1 को 100 टाइम मल्टीप्लाई करो, हाँ 1 ही चाहता। 1 को 1000 टाइम जी मल्टीप्लाई सर. करो, 1 ही जी चाहता। सर, वन यहाँ था. ठीक है ना? तो यहाँ तक जी कुछ सर. डाउट है? एनी डाउट हाँ. टिल हियर? नहीं सर. नो डाउट सर. तो आपकी प्रीवियस क्लास जो अपन डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से पहले जो करे थे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, वो याद है आपको? याद है? हेलो, जी सर, रेशो याद है. जी, हाँ, हेलो हेलो. हाँ बोलिए, कैसा रहता लिमिट कंपैरिजन टेस्ट? लिमिट दिस इज कंपैरिजन टेस्ट, यूएन समेशन वैल्यू निकालते मीन्स सर, यूएन फिर वैल्यू उसके ना, बाद. यूएन में से वीएन वैल्यू निकालेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो रेशियो टेस्ट के जी सर. प्रॉब्लम को पर्टिकुलर, वीएन वैल्यू. वीएन वैल्यू. बोलिए क्या होता, 1/, वीएन वैल्यू हाईएस्ट के लिए पावर ऑफ हाईएस्ट एन पावर ऑफ न्यूमरेटर इज न्यूमरेटर 1, डिवाइडेड बाय हाईएस्ट. यहाँ n का पावर 1 जी. है, यहाँ n का और पावर हाईएस्ट है पावर ऑफ डिनोमिनेटर. रूट, रूट मतलब 1/2। एंड 1 into 1/2. तो 1/2 इच. नहीं, सॉरी, इट विल बी 1 + 1/2 इज 3/2। 3/2. 3/2. थ्री ठीक बाई है, टू सर. तो उसके बाद आप क्या करते हैं, जी सर. रेशियो टेस्ट के लिए un/vn की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, राइट ना? जी. जी un सर. वैल्यू इज 1/n+2 into root of n+1 multiplied by second fraction will become reverse. It means that it is n to the power of 3/2, correct है? यस सर. 1 by, we can take n common from here, it is becomes 1 plus 2/n, and ये रूट में से भी अगर n कॉमन ले लिए तो what happened here, 1 plus 1/n। अब्दुल हक, अब्दुल हक, इधर आइए। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे और थोड़ा सा, which is equals to 1 by जी सर. 1 by, this is n as it is, this is 1 plus 2/n also as it is, okay, okay ना? एंड इसको अपन स्प्लिट करके इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए,
ये रूट ऑफ एन को एन पावर 1/2 लिख देंगे और बाकी वाले टर्म को रूट लगा देंगे एज इट इज। ठीक है, ये n पावर 3/2 को भी ऐसा करेंगे, n पावर 1 n पावर 1/2 कर देंगे। इससे एडवांटेज क्या होता है आपको, ये n कैंसिल, n पावर 1/2 यहाँ से, n पावर 1/2 यहाँ से कैंसिल, अप्लाइंग लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑन बोथ साइड्स, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un by vn which is equal to लिमिट, ऑलरेडी आपको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आता देखिए, अच्छा। यस, जी आता सर। नहीं आता, 1 तो + 2/n। आता सर। जी, यही मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको लिमिट कंपैरिजन परफेक्ट समझ में आ गया, इसीलिए मैं डायरेक्ट स्टेप्स जी कर रहा हूँ। राइट, कुछ डाउट है यहाँ तक, बताइए। as n tends to infinity what happened to this problem? नहीं सर, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के तो मैं क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा सर, वो तो फिर अच्छा वो है। लिमिट जस्ट आज का कंपैरिजन जरा टेस्ट के करना पड़ता मेरे को और। करना, प्रैक्टिस करे बाद ही आपको समझ नहीं आता। तो फाइनली these two values will जी become सर। 0, you see, this will become 0, even this one also will become 0. So as n tends to infinity, what is our answer we are getting? We are getting 1, which is not equal to 0, which is a finite number, which is a finite value, right? जी तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, बाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट summation un and summation vn behave same, summation vn behave, अपन क्या करें देखिए, रेशियो टेस्ट के प्रॉब्लम को लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व कर रहे हैं, केस व्हेन x इज इक्वल टू जी 1 में। ओके, बट समेशन vn इज इक्वल टू, समेशन vn कितना है अपने पास, 1 बाई n टू द पावर ऑफ 3/2, this will be comparing with 1 by यस सर। n power p, so we can say that p value is 3/2, it means that 3/2 value definitely greater than 1. So by p test summation vn, summation vn convergent, so implies that summation un also convergent, summation un also convergent. तो अब इसका फाइनल रिजल्ट देखेंगे अपन, हेंस द गिवन सीरीज, क्या लिखते हैं फाइनल रिजल्ट इसका, मैं स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देके इसको खत्म कर देता हूँ। हेंस जी सर। गिवन सीरीज, गिवन सीरीज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट इफ, यहाँ कन्वर्जेंट का स्टेटमेंट अपन 2 पॉइंट में कैसे लिखे देखो, ऊपर देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं कन्वर्जेंट के लिए अपन, कन्वर्जेंट कब हो रहा है, x² लेस देन 1 लिखे, तो लेस देन में भी हो गया और इक्वल टू में भी कन्वर्जेंट हुआ ना, तो टुगेदर कैसे लिखते हैं, इफ x² less than or equal to 1 and divergent if x² is greater than 1, which is end of this problem. तो क्या करें अपन, फिर से एक बार मैं शुरू से एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उसका। स्टार्टिंग क्वेश्चन आपका यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन, समेशन x पावर 2n बाई n+2 इंटू रूट ऑफ n+1, ये un की वैल्यू, nth term of the given series. From the un we are finding un+1 value, that is wherever n is there we replace with n+1. Okay, and finding the value of un by un+1, some of the terms are cancelled, then we are applying limit n tends to infinity on both side. यहाँ तक तो आपको कंफर्म मालूम है। अब ये अपना आंसर जो है 1/x² के ऊपर डिपेंड हो रहा, तो आप रेशियो टेस्ट का स्टेटमेंट लिखना है, इफ 1/x² इज ग्रेटर देन 1, x² लेस देन 1 कन्वर्जेंट, 1/x² इज लेस देन 1, x² ग्रेटर देन 1 डाइवर्जेंट, 1/x² इज इक्वल टू 1 मींस x² इज इक्वल टू 1, टेस्ट फेल्स, तो x² इज इक्वल टू 1 का मतलब x वैल्यू 1, x वैल्यू 1 ले जाके क्या करें अपने क्वेश्चन में, ये un की जगह पे रिप्लेस कर दिए, तो वी आर गेटिंग वन आंसर लाइक दिस, समेशन 1/n+2 इंटू रूट n+1, तो ये un की वैल्यू है।
तो यहाँ से आपको पता है कि इसको अपन चाहे तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से भी सॉल्व कर सकते, तो मैं वैसा ही करा। तो वी एन की वैल्यू चूज करें, यू एन बाई वी एन फाइंड आउट करें, लिमिट अप्लाई करें, फाइनाइट वैल्यू आया, लिमिट का स्टेटमेंट लिखे, तो x इज इक्वल टू 1 पे ये प्रॉब्लम कन्वर्जेंट हो जा रहा, ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जा रही। तो फाइनली अपन आंसर लिखे गिवन सीरीज विल बी कन्वर्जेंट इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट हो रहा बोल के ऐसा लिखे। समझ में आ गए? सर। जी। एक मरतबा आप देखिए इसको, मैं एंड ऑफ द मीटिंग कर रहा हूँ, फिर से मीटिंग ज्वाइन करिए थोड़ी देर के बाद। हाँ सर। ठीक है।